Welcome to everybody. Today we will learn about material. Subject to your cost accounting, unit 2, material. Question is your material. The ingredients which are used in production to make finished product is known as material. It is the prime component. It is the prime component of a product. Without material, it is not possible to produce any finished products. That means whatever material, whatever product that we produce, normally it is composed of a particular material or number of materials in a perfect proportion way. Without material, it is difficult to produce any type of product. That is why material is the most vital point, and it should be taken into account. Depending upon the nature of the business activities, number of materials are to be procured. That is why material, without having material, production cannot be done. Processing means the material which are not in a consumable state, which does not satisfy the human wants, it should be processed. It is the material. Material, it can't have any utility. Whenever it is processed, जेतबेले एटा processing हुए in a number of processes, then it changes its shape, size, color, taste. It means to a consumable stage, to have a utility, it should be processed. The material should be processed accordingly. If the material cannot be changed into its a particular shape, particular size, particular color, particular taste, so that it cannot be marketized. And the raw materials are in a raw stage. It does not satisfy the human wants. That is why it needs to be processed. Different materials having different nature. Depending upon the nature of the activity, number of materials are to be procured to produce a particular product, finished product. What are the materials are to be required? Accordingly, the organization has to procure. से ढंगरे से जो material आवश्यकता अछि ताकू से किनी थाए एवं गोटे प्रोडक्ट तैयारी करिवा पई जो material को जो proportion रे परफेक्ट proportion रे ताकू कंपोज करा जाए. विभिन्न रेशियो रे परफेक्ट रेशियो रे डिफरेंट मटेरियल को कंपोज करा जाए, तापर ताकू प्रोसेसिंग करी गोटे फिनिश प्रोडक्ट बनै थाउ. अकॉर्डिंगली आमे देखि परिबा जे कोनी से गोटे मार्केट रे प्रोडक्ट मिलुची, जेमती आमे कहिबा जे केते गोटे एमती बहुत गोटे प्रोडक्ट अछि. गोटे मेडिसिन कथा चिंता करिबा, गोटे मेडिसिन सेतरे केते गोटे केमिकल कंपोज करा जाय कि गोटे मेडिसिन टा तैयार करा जाउची एवं सेटा को मध्ये ताको टेस्ट करा जाउची. एटा केते इफेक्टिव हे परिबो ह्यूमन बीइंग्स पई, ताको पर्टिकुलरली आम शरीर पई केते परिमाण इफेक्टिव हे परिबो, को पावर को हम केते परिमाण रे कंपोज कले चाह द्वारा ठीक ढंग रे से रोग को भलो कर परिबो. तो एमती सब डिफरेंट मटेरियल को कंपोज करा जाय थाए, ताको स्टडी करा जाय कि देखा जाए को मटेरियल केते परिमाण रे कंपोज कले एटा ठीक ढंग रे कार्य करि परिबो. तो डे टू डे लाइफ रे आमे डिफरेंट डे टू डे लाइफ रे आमे जो जिनिस यूज करूछु तार मध्ये कंपोज करा जाउची. आगे अनदर वन इज योर आमे जो ड्रेस से क्लोथेस ड्रेस मटेरियल्स, एटा तमरो नायलॉन अछि, कॉटन अछि, टेरिलिन अछि, पॉलिस्टर अछि, ए डिफरेंट कंपोजिशन करा जाय कि डिफरेंट अदेश कपड़ा तैयार करा जाउची, जहा को नेकरा में डिफरेंट ड्रेस मटेरियल को आमे बनै पाउची. तो एमती ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल नेचर, प्रोडक्ट रो बा गुड्स रो निर्दिष्ट नेचर को जज करिके हमको नंबर ऑफ मटेरियल्स किनिया पाई पड़ता है. जदि ए मटेरियल को आमे प्रॉपर्ली यूटिलाइज न कर परिबा ताहले सेटा भी वेस्टेज ही जबो, स्पॉइलेज होवार संभावना अछि. तो ऑल द मटेरियल्स व्हिच आर नॉर्मली प्रोक्योर्ड दैट शुड बी यूज्ड properly in time, so that we can't lose any material, and that can be we can come to the confident that the material is used in the optimum stage with minimum wastage or minimum spoilage. Depending upon the nature of the material,
The materials includes your raw material, raw materials, components, spare parts, consumable store, consumable stores and tools. Material inputs, raw material, components, spare parts, consumable stores, tools. All these are coming under material. किंतु गोटे ऑर्गेनाइजेशन रो जो प्रोडक्ट तैयारी करी से प्रोडक्ट पई कोन कोन दरकार से कंपनी बा से ऑर्गेनाइजेशन चिंता करियो अकॉर्डिंगली सेही प्रकार मटेरियल को से नबा. तो मटेरियल आमे जदि देखिबा टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सुगर इंडस्ट्री तार कॉस्ट रो पाखा पाखी 60 माने नियर टू 60 to 65% ऑफ द प्रोडक्ट कॉस्ट तो मटेरियल होची. रेस्ट असुतम रदा 60 to 65% of the cost of the product cover होची material. अदर तार वेजेस अछि, ओवरहेड्स अछि, अदर एक्सपेंसेस एकु नेकी सो करा जाछि. तेनु आकु नजर रखिले रॉ मटेरियल्स, कंपोनेंट्स, स्पेयर पार्ट्स, कंज्यूमेबल स्टोर्स, टूल्स, all these are coming under material. Raw material in a raw stage, components number of items जेतरे किछि कंपोज अटैच करा जाय थाए, स्पेयर पार्ट्स एमति किछि प्रोडक्ट अछि जोठी नंबर ऑफ आइटम्स हमको असेंबलिंग करी के गोटे जिंस तैयारी करा जाय गोटे बड़ जिंस तैयारी कर सला पर सेतरे जो छोट छोट किछि आइटम्स रो आवश्यकता पथाय ताको मध्ये देख हम रॉ मटेरियल के काउंट करि थाउ. दैट इज स्पेयर पार्ट्स. अनदर वन इज योर कंज्यूमेबल स्टोर्स लाइक ग्रीस, कॉटन, एनी टाइप ऑफ क्लोथेस, नंबर ऑफ टिनी आर्टिकल्स, टिनी आइटम्स किसी जिन आवश्यकता पड़ता है सेगुड़ा हमें कंज्यूमर स्टोर्स भितर रखी था जहाँ को आम मटेरियल अंडर काउंट करछे. नेक्स्ट वन इज योर टूल्स. डे टू डे लाइफ में आम जो प्रोडक्ट तैयारी करछे ता पई जो टूल्स रा आवश्यकता पड़छी, जो यंत्रपातिर आवश्यकता पड़छी सेतिर मध्ये किछि परिमाण आवश्यकता है ताको मध्ये हम टूल्स अंडर मटेरियल अंडर नोचे. all these are coming under materials. Material inputs, these are the items, means raw materials, components, spare parts, consumable stores, tools. Next is your classification of material. Classification of material. Under classification of material, depending upon the nature, depending upon its importance, we have classified the material into two parts. Number one is your direct material. Second one is your indirect material. Direct material, indirect material. Direct material. Already we have learned in the chapter cost sheet. Direct material, indirect material. Again, we will remind direct material. The material which is easily identified and conveniently measured is known as direct material. Easily identified, conveniently measured is known as direct material. It is the prime component of the finished product, and without this type of material, it is not possible to produce because it is the main component. Direct material is the main component of a product. Mostly the product is composed out of direct material. The term direct material, it is easily identified. Easily identified means the product, the material which we can easily identify
आइडेंटिफाई इन द फिनिश प्रोडक्ट दैट मीन्स आम फिनिश प्रोडक्ट को देखिले जापर एक्चुअली जिनटा कौन तैयारी कर जो आम जापर आइडेंटिफाई करवा दैट मीन्स ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज मेड अप ऑफ दिस टाइप से आम कहीपर इट इजिली आइडेंटिफाई जेहेतु गोटे मेन कंपोनेंट प्राइम कंपोनेंट तेणु सहज सुविधार आम जापर गोटे मटेरियल गोटे सॉरी गोटे प्रोडक्ट कौन तैयारी इजिली आइडेंटिफाइड एग्जांपल एनी टाइप ऑफ फर्नीचर डेस्क बेंच टेबल आम जानी कौन तैयारी इट इज मेड अप ऑफ वुड ताले काठर तैयारी आम आइडेंटिफाई करदे ताले इटा होछ डायरेक्ट मटेरियल कन्वीनियंटली मेजर द दीटा टर्म सैटिस्फाई करदब डायरेक्ट मटेरियल कन्वीनियंटली मेजर केते परिमाण रे से मटेरियल लागि यूज करा जाय गोटे प्रोडक्ट तैयारी करिया पई केते परिमाण रे से मटेरियल लागि जेतला हम ताको मेजर करि परले इन केजी मीटर लिटर ये जेकोसी तार जो डिफरेंट मेजरिंग यूनिट्स अच्छी आम जब मापिक कही पारे परिमाण जापर दैट इज योर कन्वीनियंटली मेजर ताले गोटे डेस्क को बनवाई गोटे टेबुल टे बनवाई आम जानले इजिली आइडेंटिफाइड एटा काठरे तैयारी ताले वुड इज द डायरेक्ट मटेरियल कन्वीनियंटली मेजर मीन्स केते परिमाण काठ लगी आम कहि परिबा एठी जी क्यूबिक फिटर काठ लगी नर्माली आम डे टू डे लाइफ जो कहे सिफ्ट 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट काठ हेल्ले गोटे टेबुल हो दिस इज द डायरेक्ट मटेरियल स्टार्ट टेकिंग दिस डायरेक्ट मटेरियल इज योर क्लॉथेज बिकॉज हम इजिली आइडेंटिफाई करि परछे इट इज मेड अप ऑफ क्लॉथेज आइडेंटिफाई हो गला आम जानि गले इट इज द डायरेक्ट मटेरियल ऑफ डायरेक्ट मटेरियल इज योर क्लॉथेज फॉर ए शर्ट इजिली आइडेंटिफाइड कन्वीनियंटली मेजर केते परिमाण कपड़ा लगी 1.5 meter or 2 meter depending upon the size. So it is easily identified and conveniently measured. It is made up of cloths identified, measure conveniently measured 1.5 meter. This is the direct material. Similarly, number of products are there. Number of products are having made up of different items. यदि आम ताको इजिली आइडेंटिफाई कर देले जानि गले एटा है ता डायरेक्ट मटेरियल केते परिमाण लागि छि ताको मेजर कर दबो जानि गले इट इज डायरेक्ट तारे डिफरेंट एग्जांपल्स आर देयर कहली जेमती टेबल चेयर बेंच दीज आर मेड अप ऑफ वुड एटा इजिली आइडेंटिफाइड कन्वीनियंटली मेजर केते परिमाण काठ लागि छि ताको भी मेजर करि परले बस हे इट इज डायरेक्ट मटेरियल नंबर ऑफ प्लास्टिक आइटम्स मतलब हम जानि परिबा प्लास्टिक आइटम मेड अप ऑफ प्लास्टिक इज द डायरेक्ट मटेरियल इजिली आइडेंटिफाइड कन्वीनियंटली मेजर केते परिमाण प्लास्टिक लागि छि हम तो मेजर करि परछे सिमिलरली डायरेक्ट मटेरियल आज इट इज द प्राइम कंपोनेंट निश्चित भाव में इजिली आइडेंटिफाई कर कन्वीनियंटली मेजर कर ये आसला तुम डायरेक्ट मटेरियल जमती एग्जांपल दे पाउची दैट इज वुड फॉर ए फर्नीचर क्लॉथेस for a shirt. Wood clothes is the direct material. Is identified direct furniture clothes shirt. Easily identified, conveniently measured. Next one is your indirect material. Indirect material. You can write or you can say in a negative form. The material which is not easily identified but conveniently measured is known as indirect material. It means those such material very negligible in quantity, negligible in size, but without help of indirect material it is not possible to finish the product, to refine the product. It means again I can say that the material which is not easily identified and conveniently measured is known as indirect material. Though such material is very negligible in nature, negligible in quantity, negligible in size, but helps in finishing the product. And एक प्रकार material indirect material को आमे सहज रे चिन्हि पारुना ते प्रकृत से प्रोडक्ट रे इनडायरेक्ट मटेरियल परिमाण केते आमे सहज जानि परना किंतु सहज रे आमे मेजर आइडेंटिफाई करि पारु डायरेक्ट मटेरियल को इनडायरेक्ट मटेरियल को सहज रे आइडेंटिफाई करि पारुना एवं कन्वीनियंटली मतलब मेजर भी करि पारु केते परिमाण रे लागि छी हाउ मच क्वांटिटी हैज बीन यूज्ड
इन फिनिशिंग द प्रोडक्ट सेटा को हम सहज आम मेजर करना इट इज योर इनडायरेक्ट मटेरियल किंतु ए इनडायरेक्ट मटेरियल जदिव भेरी नेग्लिजिबल नेचर नेग्लिजिबल इन साइज नेग्लिजिबल इन क्वांटिटी बट गोटे प्रोडक्ट को गोटे रॉ मटेरियल जो डायरेक्ट मटेरियल अच्छी फिनिशिंग करी गोटे फिनिश्ड प्रोडक्ट बनैबा चकाचक करने आई कैचिंग करने कंप्लीटली फंक्शनल कंडीशन को आने हमको इनडायरेक्ट मटेरियल आवश्यकता अच्छी जो मटेरियल गोटे प्रोडक्ट को पूरा कंप्लीटली तार शाइनिंग देखाए तार लुक आई कैचिंग हुए आई लुकिंग देखा जाए एवं एटा निश्चित भाव भल कार्य करता है तेणु से आम इनडायरेक्ट मटेरियल को छोट बोली भाविबा नहीं कारण यार एप्लिकेशन अच्छी किंतु आम एठी रखिले इजीली आइडेंटिफाइड कन्वीनियंटली मेजर इनडायरेक्ट मटेरियल आम कंसीडर करछे नॉट इजीली आइडेंटिफाइड एंड कन्वीनियंटली मेजर दीटा जिनस हो पारिबो बट it is very important because it helps these materials help in finishing and refining the product. Example, you can say let example furniture is a product. Furniture is a product. Direct material is your wood. काठ हला डायरेक्ट मटेरियल इजीली आइडेंटिफाई कर परछे कॉन्फिडेंटली मेजर कर परछे किंतु ताको ठीक ढंग रे आमे मेजर करबा सॉरी ताको ठीक ढंग रे रिफाइनिंग करी आई कैचिंग करिया पई मार्केटेबल कंडीशन को आनिया पई आर आउ किछि आवश्यकता अछि सेति पई एथिरे किछि परिमाण रे इनडायरेक्ट मटेरियल रो यूज हेइ थाय त इनडायरेक्ट मटेरियल कोन आसी जिवो वुड पई यू कैन से कलर नेल अदर छोट छोट किसी एमती इक्विपमेंट्स थाए जो आम आउ टे आई कैचिंग कर कलर कलर मीन्स प्रोडक्ट बन सारापर आम से कौन कर किसी कलर कोटिंग देता लाइक प्राइमर सिंथेटिक कलर और अदर डिफरेंट कलर शाइनिंग कलर ये कलर दि जाए जहाँद्वारा आम आई कैचिंग कर मार्केटेबल कंडीशन तो प्लेनली केवल खाली काठ तैयारी करते हम किंतु सेटा को मार्केट में ठीक ढंग से आम मार्केटाइज कर बिकज इट आई कैचिंग होता है जोटा कि इट इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोडक्ट जदिव आ परिमाण इजी नॉट इजीली आइडेंटिफाइड रंग दि जाए सत आम सहज चिन्हुना रंगटा को नजर न पकईकि आम डायरेक्ट मटेरियल पर बेसी नजर पकई था तेणु ये कलर आसला नेक्स्ट वन इज योर नेल जहाँ आम कंटा बोली कही तो डिफरेंट पार्ट्स गोटे फर्निचर डिफरेंट पार्ट को आम फिक्स करने कंटार आवश्यकता है आम किसी कंटा दे कंटा लगे आम डिफरेंट पार्ट्स गुड़ा आमको फिक्स करने पड़ता है जहाँ परिमाण भी बहुत कम अनदर इक्विपमेंट्स नहीं पार कंपोनेंट्स नहीं पार जहाँ आम इक्विपमेंट्स नंबर छोट छोट इक्विपमेंट्स को नहीं पार जमी साइड रे गोटे छोट किसी गोटे पॉइंट लगा देखिए आंगल रे डिफरेंट साइज रो सब शेपिंग रो आइटम मिलूँ कलरिंग करने बॉर्डरिंग करने आम साइड रे किसी अल्प किसी छोट छोट मटेरियल जोटा मार्केट में मिलूँ आम नहीं फिक्स कर तो युवा हुए कौन ना प्रोडक्ट आउ टे गुड लुकिंग देखी था ये जिन आसता है तेणु यार परिमाण कंपेरेटिवली बहुत कम एवं यहाँ गोटे प्रोडक्ट को बहुत आई कैचिंग कर दिए बट ये जिनस किए नजर रखती मेन प्रोडक्ट मेन मटेरियल मेन प्रोडक्ट मटेरियल को दिए कलर टाक बेसी नजर रखती तेणु इट नॉट इजीली आइडेंटिफाइड बट कन्वीनियंटली सॉरी नॉट इजीली आइडेंटिफाइड एंड कन्वीनियंटली मेजर ना सहज आम आइडेंटिफाई करूँ ना सहज कन्वीनियंटली मेजर कर तेणु नेल गोटे टेबुल टे बनवाई आम जान 10 ରୁ 15टा कंटा हेल्ले आम गोटे टेबुल टाक फिक्स कर दे पार बट कहार भी नजर न था से कंटा केवल नजर थाए टेबुल टे साइज सेट इट इज मेड अप ऑफ वुड ठीक अच्छे ये काटा ठीक जापर कि कंटा कहार नजर न था कलर कहार बेसी नजर न था अदर किसी जो नंबर ऑफ डिफरेंट डेकोरेटिव आइटम्स को आम फिक्स कर बॉर्डरिंग कर अदर साइड अटैच कर these are items are normally neglected by the consumers तो से कंपेरेटिवली परिमाण बहुत कम था जहाँ को आम नजर रखी न था बट ये प्रोडक्ट ये ये मटेरियल बिना प्रोडक्ट को फिनिशिंग करबा फाइनलाइज करबाटा कष्टकर होता है सिमिलरली अनदर एग्जांपल यू कैन से दैट इज योर
intention short I mean dress pinuche the dress ba shirt bi koi pariba or you can say that is garment case hoba main material direct material is your clothes is your direct material किंतु जदि आम इनडायरेक्ट मटेरियल कथा चिंता करिबा यू कैन से स्टिचिंग थ्रेड बटन्स हार्डनिंग आइटम another one is your you can say blue color यहाँ पर कोई तो indigo अदर ये गुडे तमरो आसीबो सब गुडे ये आइटम को हमें इनडायरेक्ट आइटम बा इनडायरेक्ट मटेरियल पे कंसीडर कर देखो क्लोथ्स गुडे गारमेंट आमे पिंदिचे ड्रेस पिंदिचे तो इट इज मेड अप ऑफ क्लोथ्स डायरेक्ट मटेरियल इजीली आइडेंटिफाई कर परछे कन्वीनियंटली मेजर कर परछे ये असला हमर डायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल किंतु गोटे कपड़ा किणी कि आनी आपको ड्रेस टे बनेवा पई हेले आदरे शेपिंग दरकार से शेपिंग करी साला परे तापर सेटा सीविंग रा आवश्यकता कटिंग अकॉर्डिंग साइज अनुसार कटिंग करा जाए कटिंग कला परे गोटे टेलर ता कटिंग काटी साला परे कपड़ाटा को स्टिचिंग कर थाए तो स्टिचिंग करिया पई स्टिचिंग थ्रेड रा आवश्यकता अछि सूता रा आवश्यकता अछि जहा को हम नजर दोना बा गोटे गारमेंट रे हमें स्टिचिंग थ्रेड ऊपर कोनोसी नजर न थाए यार परिमाण कंपैरेटिवली डायरेक्ट मटेरियल सहित जदि इनडायरेक्ट मटेरियल कंपेयर करबा बहुत परिमाण कम लागे था जहा को हमें नजर दे न थाउ किंतु प्रोडक्ट फिनिशिंग करबा पे केते हेल्प करछि ताले स्टिचिंग थ्रेड हमें स्टिचिंग थ्रेड गोटे बंडल मिलुछि गोटे कॉस्ट रे मिलुछि ड्रेस टे तैयारी करिया पई केते केते नंबर सूता लागुछि ताकू मेजर करबा कष्टकर कंपेयर करो गोटे क्लॉथेस सहित ये स्टिचिंग जो थ्रेड सूता जो स्टिचिंग सब होइछि एगुडा को काउंट करबा मेजर करबा कष्टकर स्टिचिंग थ्रेड बटन्स लाइक डिफरेंट बटन्स हम सब यूज करछे जो डिफरेंट बटन्स यूज करछे तार परिमाण बहुत कम कारण इट इज अवेलेबल इन द मार्केट एट ए पैकेट इट इन 100 200 500 बटन्स नै गोटे पैकेट गुडा अछि हम 8-10 टी बटन नै कि बटन्स नै कि हम यूज करछे negligible quantity hardening items like color different size रे सब आप जो hardening part दिया जाते हैं तार परिमाण बहुत कम लगते हैं जोटा कि विजिबल भी हुए ना अदर भीतर केतोटे स्टिकर मध्ये हम यूज करिथाउ नंबर ऑफ स्टिकर्स यूज करिथाउ आ अल्प किछि इंग्रेडिएंट अल्प किछि थाए हमर क्लॉथेस थाए जो डिफरेंट शेप साइज करिया पे हम सब डिफरेंट कलर यूज करिथाउ तार परिमाण बहुत कम एमती नंबर ऑफ आइटम्स अछि जहा को हमें गोटे गारमेंट्स पई इनडायरेक्ट मटेरियल रूपे हम कंसीडर करथाउ वा लेडीज नो केस गर्ल्स को केस रे जो गारमेंट्स मिलुची देखो डिफरेंट सब मेटल्स रो प्लास्टिक रो सब डिफरेंट चेन रे लगे कि ताको आई कैचिंग करथांती तो दीज आर आइटम्स कमिंग अंडर इज योर इनडायरेक्ट मटेरियल तो गोटे प्रोडक्ट किनिला बेले गोटे गारमेंट को बा गोटे ड्रेस मटेरियल किनिला बेले हम बेसी नजर देथा को मटेरियल रे तयारी मटेरियल मींस इज योर डायरेक्ट को कपड़ा तयारी इट इज सूता कपड़ा कि नायलॉन कि पॉलिस्टर कि टेरिलिन कि रेयन कि वूल यहाँ पर बेसी हम गुरुत्व दे न था थ्रेड बटन्स हार्डनिंग पार्ट ब्लू जो व्हाइट ड्रेस पे आम जो ब्लू यूज करुचे कलर पे अदर्स ये सब आइटम्स को कंसीडर कर सो दीज आर आइटम्स आर कमिंग अंडर इनडायरेक्ट मटेरियल एंड क्लॉथेस इज योर डायरेक्ट मटेरियल फॉर गारमेंट लाइक फर्नीचर यू नो वुड नंबर ऑफ आइटम्स अच्छी नंबर ऑफ थिंग्स अच्छी इजीली आइडेंटिफाई करबा इजीली ताको मेजर करि परिबा जहाको हम डायरेक्ट मटेरियल कहबा जहाको हम इजीली आइडेंटिफाई करि परिबा नाही इजीली ताको मेजर भी करि परिबा नाही ताको हम इनडायरेक्ट मटेरियल कहबा जदिओ इनडायरेक्ट मटेरियल रो कंपोनेंट्स कंपैरेटिवली बहुत कम तथापि हम ताको गुरुत्व देथाउ बिकॉज़ these indirect materials help in finishing refining polishing the finished product which is
आई कैचिंग होता है ता सहित कौन हुए ना सहजरे आम मार्केटाइज कर। सो दीज आर दी दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल दैट इज डायरेक्ट मटेरियल एंड वन इज इनडायरेक्ट मटेरियल। इतने नंबर ऑफ आइटम्स अच्छी आम देवी दुई तीन एग्जांपल देवी आपको नजर रखी तुम अलग एग्जांपल भी जापर। अगर यू कैन से इज योर बिल्डिंग, ये पक्का बिल्डिंग, पक्का हाउस जहाँ पक्का हाउस। नॉर्मली आम जो कह गोटे कोठा घर कौन या पक्का घर कौन या आम आइडेंटिफाई कर जापर इट इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, सैंड ये आइटम। यदि तार अदर विंडोज पार्ट्स कि डोर पार्ट्स को हिसाब करवा आइदर इट इज मेड अप ऑफ वुड और एक टाइप ऑफ मेटल। आजका समय काठर भी मिलूँ, मेटाल भी मिलूँ, जमी आलुमिनियम सीट्रे मिलूँ, आयरन सीट्रे मिलूँ, ताकू भी नहीं आम डोर मटेरियल भी यूज कर। तेणु से हिसाब से आम कनसीडर करदे गोटे डायरेक्ट मटेरियल गोटे इनडायरेक्ट मटेरियल। आंदोलन जो गोटे हाउस को फिनिशिंग करने जदिव एक डायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल इज लाइक दिस कलर करवा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलरिंग डेकोरम आइटम्स अटैच करवा। नंबर ऑफ आइटम्स आर देयर व्हिच हेल्प्स इन फिनिशिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर सीमेंट कलर थाए, सीमेंट पेंट थाए, सिंथेटिक कलर थाए और डिफरेंट अदर किसी कलर आइटम्स डेकोरेटिव आइटम्स थाए। सो दीज आर कनसीडर एज इनडायरेक्ट मटेरियल। तो से इनडायरेक्ट मटेरियल द्वारा कौन हुए ना गोटे आइटम फिनिशिंग हो जाए। तो दीज आर द आइटम्स कमिंग अंडर डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल एंड मटेरियल द मेन कंपोनेंट ऑफ द प्रोडक्ट and the material may be direct, may be indirect, and the quantum of a material, direct material, indirect material depends upon the nature of the product. गोटे प्रोडक्ट रो नेचर ऊपर डिपेंड होची डायरेक्ट मटेरियल केते परिमाण लागो, इनडायरेक्ट मटेरियल केते परिमाण लागो, नेचर, साइज, शेप ए गुटे सब। तो जो मटेरियल को आमे मार्केट रे आमे तो मार्केटाइज करि परिबानी वंस इट इज प्रोसेस्ड, वंस इट इज प्रोसेस्ड it has some utility, it creates utility। प्रोसेसिंग पर गोटे रॉ मटेरियल तार यूटिलिटी बढ़ाई दिए, तो यूटिलिटी बढ़ाई देले हम इजीली ताको मार्केट रे आइडेंटिफाई कर पारिबा। दिस इज ऑल अबाउट योर क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। थैंक यू।